So, when yesterday we were discussing the concentration of electrons and holes in conduction band and valence band. Okay, so we have calculated the concentration of electron in conduction band. Okay, so this is my conduction band, and this is my valence band. Okay, top of the valence band is represented by EV, and bottom of the conduction band is represented by EC. So the concentration of electron in any semiconductor, okay, is given by NC exponential minus EC minus EF by KT. Okay, where EC is the top of the conduction and bottom of the conduction band, and EF is the Fermi level. Okay, so that means if I know the Fermi level and EC, I can calculate the concentration of electron for any semiconductor, not only intrinsic, any semiconductor, whether it is extrinsic, n-type, p-type. If I know the Fermi level, okay, and EC and EV, or EC and EV know, or EG I know, okay, so I can calculate what is the concentration of electron in the conduction band. Okay, so today we are going to derive the concentration of hole, okay, in valence band. So now put the heading concentration of holes in valence band. Okay, so as I told you how to calculate the concentration. So the formula for concentration is, you should know the density of states. Okay, so once you know the density of states of holes in the valence band, okay, as a function of energy, you multiply by the probability of finding holes. Okay, okay, so probability of finding electron in a particular energy level is given by Fermi-Dirac function. Okay, so if I say Fe, so Fe is 1 plus exponential E minus Ef by KT. So this is the probability that an energy level is occupied by electron. Okay, अगर मुझे चाहिए hole चाहिए, तो I need the probability of missing of electron. Okay, because एक hole क्या है? Hello. Sorry, by mistake. हाँ, so अगर electron missing है, तो वो hole है. So the probability of hole, finding hole, FH, okay, will be 1 minus Fe. Okay, so I can write the probability of finding hole. Okay, that is 1 minus Fe, and if I calculate 1 minus Fe, so if I calculate 1 minus Fe, okay, FH is a function of E, 1 minus Fe, and there should be D also. So 1 minus Fe, so 1 minus 1 plus exponential E minus EF upon KT. Okay, now I want to find the holes in the valence band. Okay, so in the case of valence band, EF is this quantity is negative. Okay, because your EF will be somewhere here, middle of the band gap. So this EF is greater than your E. E is what? E is what here in the valence band. Okay, so and since this E minus EF, so E minus E become negative, and your KT, okay, your KT is around at room temperature. If I calculate KT, it comes around 26 milli electron volt. Okay, it is accurately it is 2.257. Okay, so I'm writing 26 milli electron, that is 0.026 electron volt, that is 0.0257, approximately 0.026 electron volt. So now this is 0.026 electron volt, and this may be how much?
if I take silicon example, this is the one electron volt. So at least it will be 0.5 electron volts. Huh? So 0.5 electron volt is very high compared to 0.026. Okay, so this exponential, this become very high, and it is negative also. So this become exponential minus infinite. That means this quantity is this quantity will be negligible in terms of 1. Okay, so now if I solve this one, 1 minus, okay, 1 plus exponential E minus EF by KT, okay, minus 1 plus exponential E minus EF by KT, okay. So this cancel, and this term is now negligible in comparison to 1. Okay, so I can write now for the valence band. For the valence band, I can write now my FH. Okay, the probability of finding hole is equal to exponential E minus EF by KT. Okay, now what is I know FH, FHE. Okay, I know GV is the density of state for valence band. Okay, that is equal to 4 pi. Okay, 4 pi h cube 2m. Okay, I'm using now holes, so like positive particle, or you can write mh also, 3 by 2. Since this now they are in a valence band, so I can write EV minus E half. Okay, so density of state is always proportional to E power half for 3D case. Okay, so if you take 2D or 1D or 0D case, then सर E माइनस EV होगा ना सर, EV तो वो होगा ना के अंदर कम होगा ना सर। नहीं, यहाँ पे तो उल्टा है ना, यहाँ पे तो हम उल्टा जा रहे हैं, हम EV से नीचे जा रहे हैं ना, यहाँ तो नीचे, यहाँ तो नीचे जा रहे हैं। ओके, so this is now your density of state formula. You know FHE. Now you can put the values, these values, and calculate. So for simplification, I'm saying this is CP. This constant is CP. CP EV minus E power half. Okay. So now you can put these values here. इसको मिटा दूं ना मैं? Yes, sir. Okay. So if I calculate now, sir, 4 pi h cube upon into 2m, you have put CP. This constant I'm putting CP. Okay, but just for Okay, calculation, you can take this as it is. Okay, and just for simplification, I am doing this one. Or this, let it be there. Okay, we'll use EC. So now I want number of holes in the valence band. So valence band starts from EV, okay, and goes up to minus infinite. Okay, GV is CP EV minus E power half. Okay, and then we have this. Oh, हाँ एक मिनट, हाँ बोलिए। सर हम लोग माइनस इनफाइनाइट से EV तक जा रहे हैं। हाँ, प्लस इन्फिनिटी आएगा ना, EV टू सर माइनस इनफाइनाइट टू EV एनर्जी। हाँ, माइनस इनफाइनाइट ना, बिकॉज ये ऊपर इनफाइनाइट है, हम नीचे जा रहे हैं, तो लिमिट लगा रहे हैं माइनस इनफाइनाइट। मैं उल्टा कर दिया, अच्छा उल्टा कर दिया, सॉरी, माइनस इनफाइनाइट, थैंक यू, माइनस इनफाइनाइट टू उल्टा कर दिया, हायर लिमिट विल बी EV. Okay, thanks. So now what is FH? FH will be exponential, okay, E minus EF upon KT D. Okay, now integrate this thing like we have done yesterday. This is the same thing. Okay, so it will be CP को बाहर निकाल दो. Okay, constant है, exponential minus EF by KT constant है, तो EF by KT बाहर निकाल दो. Okay, so we have minus infinite EV. Okay, EV minus E half exponential और E power E by KT हमारे पास बच गया. Okay, now put EV minus E as X. Okay, so limit, if E is minus infinite, the X will be plus infinite. Okay, if E is minus infinite, this implies my X is plus infinite. When E is EV, my X is 0. So when E is
EV, my x is tends to 0. Okay, and of course d equal to minus dx. Okay, so now I can put the values, and here from here I can find my E is equal to EV minus x. So put these values. So if I substitute these values, I'll get Cp E minus EF by KT सेम आ जाएगा. Sir, हाँ. sir, e to the power minus EF upon KT is a constant. हाँ, फर्मी एनर्जी तो कांस्टेंट लेंगे ना. ये तो फंक्शन ऑफ ई पे डिपेंड नहीं करता है एनर्जी पे, जो हमारा वेरिएबल है इधर तो ई है. ओके. Yes, sir. Okay, sir. सो नाउ इट इज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, और तो इनफाइनाइट टू 0 हो जाएगा. एंड हियर माइनस dx है, तो माइनस से ये माइनस लिखेंगे, इसको मैं कर सकता हूँ 0 टू इनफाइनाइट. ओके, दिस बिकम नाउ x पावर हाफ. ओके, दिस बिकम एक्सपोनेंशियल. ई को मैं लिख सकता हूँ ev माइनस एक्स. सो ev बाय kt एंड e पावर माइनस x. ओके, एंड दिस बिकम dx. सॉरी, यहाँ पे फिर एक मिस्टेक हो रही है. यहाँ पर आई एम राइटिंग e दिस इज kt, ev माइनस e kt. ओके, सो ev माइनस kt, तो यहाँ से मुझे मिलेगा ev x kt, तो हाफ kt बाय हाफ यहाँ से मिलेगा. ओके, एंड व्हेन आई राइट d दैट विल kt यहाँ से आएगा. ओके, सो दिस बिकम kt पावर 3/2. ये करेक्ट कर लेना. आई एम पुटिंग ev माइनस e एस kt. ओके, वरना तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना, वरना फिर उसको kt उसको लिखना पड़ेगा इधर. सो नाउ okay, so if I solve this one, Cp यहाँ से ev आ जाएगा. so I can take common ef minus ev by kt. okay, 0 to infinite x power half and kt power 3/2 also है. kt power 3/2 e power x dx. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? इंटीग्रेशन सिंपल कर सकते हैं इसको, तो कोई दिक्कत है यहाँ तक करने में? लिमिट्स इंफिनिटी होगा तब x इंफिनिटी हो जाएगा ना, मतलब लोअर लिमिट. भी हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था ev माइनस e इक्वल टू x. ओके, x. तो e माइनस इनफाइनाइट था, तो x प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा. हाँ, तो यहाँ तो मैंने तो माइनस इंफिनिटी, तो मैंने इनफाइनाइट कर दिया, तो माइनस भी आया था ना. डी अब डी करेंगे, d इक्वल टू माइनस dx करेंगे. ओके, तो ये लिमिट को माइनस कैंसिल शिफ्ट कर दिया लिमिट्स. हाँ, लिमिट को मैंने रिवर्स कर दिया. समझ में, थैंक यू. ओके, सो नाउ दिस इज बिकम Cp. Cp की वैल्यू क्या थी? 4. Cp की वैल्यू क्या थी? 4 पाई h क्यूब. ओके, 2m होल था, पावर 3/2 kt बाय 3/2. ओके, और एक्सपोनेंशियल माइनस ef माइनस ev बाय kt. और इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 टू इनफाइनाइट x पावर हाफ e पावर माइनस x dx. रूट पाई बाई 2 आएगा ना, गामा फंक्शन है ये. ठीक है, तो रूट पाई बाई 2 आ जाएगा इसका. तो आई एम राइटिंग हियर रूट पाई बाई 2. रूट पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिल गया 2 मिल गया. ओके, पाई 1 ईयर है, हाफ ईयर 3/2 हो जाएगा. ये 3/2 है, ये भी 3/2 है. इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2mp. ओके, 2 पाई mp kt h स्क्वायर पावर 3/2. इसको खोलेंगे तो वापस एच क्यू आ जाएगा. 2 पाई है ही, 2 पाई. ठीक है, मैं सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया देखो यहाँ पर. 2 इधर है, 2 तो ये ऑलरेडी है. ओके, पाई 3/2 है. सही जा रहा है सर. ठीक है, तो दिस बिकम एक्सपोनेंशियल माइनस ef माइनस ev बाय kt. ओके, so I can write now my concentration of hole in valence band is given by, this is constant, say this is
This is called effective density of holes. Okay, like there is called effective density of electron in conduction band. So this is NV exponential, okay, minus EF minus EV by KT. Okay, so this is my formula where you should know what is NV. Okay, you should know NV. What is NV? This is effective mass of hole in the crystal. Okay, so these both formulas are very simple to remember. Okay, if you want to get conduction band, just assume somewhere here your EF is there. EF is there. So if you want conduction band, so EC minus EF. Okay, if you want the valence band, then you might EF minus EB. Okay, EF minus EB. Of course, minus will be there. In the bracket, this quantity should be positive. So for example, I'm writing now this for electron. So for conduction band, that is NC exponential EC minus EF. Okay, because यहाँ चाहिए तो ये ऊपर से नीचे है. Okay, EC minus EF और यहाँ पर क्या EF minus आपको ये ब्रैकेट में पॉजिटिव रखता है. So it's easy to remember these formulas. So these two are very important formulas. Okay, concentration of hole in conduction band and concentration of electron in concentration of holes in valence band. Okay, now once we know this general expression, okay, now my aim is to deal with intrinsic, okay, intrinsic and extrinsic semiconductor. Okay, so now we'll calculate the concentration of electron in intrinsic semiconductor. Okay, because we know the concentration of electron in a conduction band is dependent on temperature. I yesterday told you when we at T is equal to 0, our semiconductor behave like a insulator. Okay, as you supply energy, some bands get broken and electron go from valence band to conduction band. So this concentration is temperature dependent. Okay, so now we'll derive the formula for carrier concentration. Okay, for intrinsic semiconductor. So put the heading carrier concentration in intrinsic semiconductor. So one thing we know that in intrinsic semiconductor, this is my conduction band, this is my valence band, this is my EV, this is my EC. Okay, so when electron move from here to here, we'll get holes here. Okay, so number of electron is equal to number of holes. That condition we have to remember for intrinsic semiconductor. For intrinsic semiconductor, okay, because electrons are coming from valence band directly only, that is temperature dependent. So N equal to P. Okay, so I say because in intrinsic I write Ni, so intrinsic semiconductor. Okay, now I can write Ni square equal to Np. Okay, and I know what is N and P. Okay, and N value is simply Nc exponential minus Es minus Ef by Kt. Okay, and I know P is Nv exponential Ef minus Ev upon Kt. Okay, just substitute this value here and calculate Ni square and solve. Calculate Ni, final expression nikalo Ni ka. Just put these values. You know what is Nc or to Nv. Just put these values and calculate intrinsic carrier concentration. So N into Nv. So I can write now Exponential. Ni square. Okay, that will become Nc Nv. Okay, when I write exponential e power minus, okay, then multiply तो हो जाएगा EC minus EF. Okay,
और ये आएगा माइनस, कॉमन निकालिए तो प्लस EF and minus EV, okay, by KT. So if I want now my Ni, so I take under root, this become under root NC by NV, and this is cancel, so this become exponential EC minus EV upon half KT if I'm taking under root, okay. And the difference between EC and EV is given by band gap, is equal to band gap, okay. So I can write now Ni is equal to, I know what is NC. NC is 2 pi m n KT h square power 3/2, okay. Similarly I know this is also NB is 2 pi m h और mp KT, आप mh भी लिख सकते हो, ठीक है, किसी को mh लिखनी आदत होती है, me mh, okay, 3/2, okay. And this is my E, I can write Eg upon 2 KT, EC minus EV, okay. So now Ni can be written as, if I take under, इसको कर दो 2 बार आ जाएगा, okay, 2 pi KT h square तो बाहर आ जाएगा, okay. This become mn mh mp star power 3/4 e power minus Eg upon 2 KT. So this is your expression for intrinsic carrier concentration, okay. If I take this as a constant, यहाँ पे T 3/2 है, okay. So if I take Ni constant, so I can write this is a constant T power 3/2 exponential minus Eg upon 2 KT. That means your concentration depends on temperature, okay. At low temperature this term will dominate, higher temperature this exponential term will dominate. Intrinsic concentration generally we see at higher temperature, so in intrinsic case this exponential term is very important, and that's this band gap also very important, okay. Depending on the band gap you will have carrier concentration. अगर band gap ज्यादा है तो ये माइनस में है तो concentration कम हो जाएगा. For example सिलिकॉन का band gap 1.1 है and your germanium is 0.67, तो जर्मेनियम के अंदर एट गिवन टेम्परेचर इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ओके. सो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन बैंड गैप, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ओके, डिपेंड्स ऑन कैरियर concentration depends on band gap, okay. And it also depends, of course it depends on temperature also, okay. So B is the constant, okay. So this expression you have to remember. सर Eg by 2 कहाँ से, मतलब डिनोमिनेटर में 2 कहाँ से आया? हमने स्क्वायर रूट लिया था ना एक्सपोनेंशियल का, जब Ni स्क्वायर था उसको रूट लिया था तो एक्सपोनेंशियल में तो आएगा हाफ आएगा, ठीक है. सर वो सर वो जो आप बोला ना टेम्परेचर के साथ जो हाँ, रिलेशन, हाँ सर वो एक बार रिपीट कर वो अभी रिपीट करेंगे जब टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तब हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. अभी हम इसको Sir, हाँ. So for intrinsic semiconductor, you have just told that the number of holes is equals to number of electrons. तो ये intrinsic का condition है. हाँ इंट्रिंसिक में होता ही है ना, तभी तो हमने उसको सॉल्व करके ये निकाल दिया, ठीक है. Okay sir. ये एक्सप्रेशन याद रखना है आपको, एटलीस्ट डिपेंडेंस याद रखनी है, ओके. ये वैल्यू चाहे याद ना हो, एटलीस्ट यू शुड नो द फॉर्मूला, ओके. डिपेंडेंस आपको ये याद रखनी है, ठीक है. नाउ once we know carrier concentration, now I am interested in position of Fermi level. अभी हमने बोल दिया बीच में होती है, वो कैसे पता चला, ठीक है. हमने अंदाजे से बोल दिया था ना कहीं बीच में होती है, फर्मी लेवल इज इन बिटवीन कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, वो कैसे पता चला. एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है, पहले तो रफली कैसे पता चला आपको कि वहां होती है, ठीक है. तो रफली भी कैसे पता करने के लिए ये आपको पता है, दिस इज योर फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ओके. 1 प्लस एक्सपोनेंशियल E minus EF
by KT. Okay, and this is your conduction band and this is your वैलेंस बैंड. ओके, सो ये बार बार हम बोल रहे हैं कि बीच में, इधर बीच में, वो उसका आइडिया कहां से लगा. ओके, सो इफ आई से t इज इक्वल टू 0, ओके, इफ आई मेक दिस t इज इक्वल टू 0, सो मुझे पता है t इज इक्वल टू 0 पे मेरा कंडक्शन बैंड एम्प्टी है. करेक्ट, मेरा कंडक्शन बैंड एम्प्टी है. तो ये कंडक्शन बैंड एम्प्टी कब होगा? जब ये 0 है, और इस 0 को होने के लिए इसको इनफाइनाइट होना पड़ेगा. ठीक है, तो ये 0 है. अब ये टर्म पॉजिटिव होनी पड़ेगी ना. if I want my conduction band at t is equal to 0, okay, this term should be infinite. That means this is kt, t is 0, so this is only 0. Now this term should be positive, so ef minus should be positive. पॉजिटिव कब होगा? जब मेरा जो ये क्या है, कंडक्शन बैंड है. दैट मींस ये शुड बी पॉजिटिव. दैट मींस आपका ef तो इसी के नीचे होगा. ठीक है, एक चीज तो अंदाजा पता चल गया कि भाई ये इसी में, इधर तो नहीं, इसके नीचे होगा. ठीक है, अब सेकंड केस है, वो यहां होगा कि यहां होगा, उसके लिए उल्टा करके देख लो. नाउ एट t इज इक्वल टू 0, ओके, दिस शुड बी फिल्ड, दिस शुड बी फिल्ड. हाँ, एक बार वो लॉजिक एक फिर से एक्सप्लेन करेंगे, इंफिनिटी का आप जो बोले वो. हाँ भाई, अभी मैं t इज इक्वल टू 0 केल्विन पे माय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड एंड दिस इज माय एम्प्टी. यस, एम्प्टी मतलब क्या है? Fe 0 है, ऑलमोस्ट 0 है. या करेक्ट. तो Fe 0 कब होगा? जब टर्म इनफाइनाइट है. यस, ओके, अब ये तो 0 है. ठीक है, अब ये टर्म पॉजिटिव होगी तभी ये एक्सपोनेंशियल, ये तभी इनफाइनाइट होगा, वरना माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा. और ये टर्म नेगेटिव है, ये सपोज ये टर्म प्लस 0 तो इनफाइनाइट होगा. अब पॉजिटिव इनफाइनाइट होगा, माइनस नेगेटिव इनफाइनाइट होगा. तो डिपेंड करता है इस टर्म पे. तो हमको चाहिए पॉजिटिव इनफाइनाइट, दैट मींस e माइनस ef शुड बी पॉजिटिव. अब e माइनस पॉजिटिव, इसका मतलब e ef से ऊपर है. ठीक है, ठीक है. सिमिलरली उल्टा करके देख लेना, तो आपका जो ev है वो ef से नीचे होना चाहिए in order to have this as a 1. ओके, अब 1 के लिए अब ये इसको 0 करना पड़ेगा. That means ये should be negative. Okay, that means again your EF should be above than EV. Okay, so this is roughly from Fermi-Dirac statistics says you that your formula should be below conduction band and top of the valence band. Okay, now I want to exactly find, okay, what is the formula position in my intrinsic extrinsic n type पे कहाँ होगी, p type में कहाँ होगी. So first I am calculating the position of Fermi level in intrinsic semiconductor. Okay, so now put the heading position of Fermi level in intrinsic semiconductor. So for intrinsic semiconductor I know n equal to p. ओके, और आपको याद रखना है कि जो इफेक्टिव मास ऑफ होल होता है, ओके, दैट इज ग्रेटर देन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, इन जनरल. ओके, द इफेक्टिव मास ऑफ द होल इलेक्ट्रॉन जनरली डिपेंड्स ऑन बैंड स्ट्रक्चर. That we will discuss in detail when we study band theory. Okay, so for the moment you have to remember that your effective mass of proton is greater than effective mass of electron. Okay, detail we'll see when we'll how it depends on band structure. Okay, that we'll see in, when we study band theory in solids. Okay, so effective mass means sir what sir? effective mass means एक तो आपका इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? m0. Okay, that is 9.1 to 10 raised to power minus 31 kg. This is free. This is the free when there is a no force is acting. Okay, but when your electron, okay, when it is in crystal, okay, it is under the under the some potential in crystal. You have some periodic potential. Okay, so that modifies the mass of the electron and mass of the holes. Okay, so detail I am not discussing here. Okay, we'll see later. Okay. So now, okay sir. So you now n is, you know, NC exponential क्या होगा? n क्या होगा? NC n का EF EC minus EF
very good, EC minus EF by KT. Okay, and this is NB exponential EF minus EV, okay, upon KT. Okay, now NC को इधर लेके आ जाओ, इसको इधर ले जाओ, इस टर्म को, तो ये बन गया एक्सपोनेंशियल माइनस EC माइनस EF. ओके, नाउ अगेन दिस, इसको माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा. ओके, माइनस अगेन माइनस EF प्लस EV बाय KT. हाँ हाँ जी, हेलो सर प्लस EF आएगा ना, माइनस EF कैसे आएगा? हाँ सर, प्लस EF माइनस EV आएगा, प्लस EF माइनस EV आएगा सर, माइनस EV आएगा. एक माइनस EC माइनस ये तो ठीक है, ये इसको माइनस बाहर है ना, अभी तो माइनस बाहर है ना, ये तो माइनस बाहर में. माइनस बाहर होने के बाद भी, माइनस बनाने के बाहर कैसा, ये माइनस तो ऑलरेडी EF ऑलरेडी है, ये माइनस माइनस प्लस होगा. हाँ सर ये ऑलरेडी माइनस है. हाँ, तो ये माइनस ऑलरेडी है ये तो, ठीक है. अभी ये नीचे आएगा, ठीक है, इसको जब ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं उसको अंदर ले जा रहा हूँ, ऊपर से माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस EF भी आएगा. करके देखो, अपना करके देखो. ओके, so if I take this one, okay, this one become minus EC plus EV, okay, and 2EF, okay, and this become KT, इधर चल जाएगा ln, okay, so this become KT ln NB upon NC. अब तुम करके देखो अपना, ठीक है. So now if I want my EF, okay, so my EF will be Fermi level, because I am saying now it is intrinsic, okay, so I will write here intrinsic, okay, or simply I write EI, the Fermi level of intrinsic semiconductor, or EFI, okay, so I am using my own notation EFI. So this become EC plus EV by 2, okay, ठीक है, प्लस KT upon 2 ln NB upon NC, okay. So this become EC plus EV by 2, okay, plus KT by 2, and this is what, if you solve this one, okay, ये power 3 by 2, so everything NB NC में खाली एक ही चीज कॉमन है, तो MP आ जाएगा, बस MP आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा MN, बस. और तो सब सेम ही होता है, पावर 3 by 2, ओके, 3 by 2 पावर आगे जाएगा. सो दिस विल बिकम नाउ EFI is EC plus EV by 2 3 KT upon 4 ln MP ln MN, okay. So this is my formula for position of Fermi level in intrinsic semiconductor, okay. Now we will see some condition, if T is equal to 0 Kelvin, okay, so this term will become 0, okay. That means my Fermi level will be EC plus EV by 2, okay, that is mid of the band gap. अब mid of the band gap कैसा होगा, EC plus EV by 2 mid of the band gap कैसे होगा. भी सपोज ये मेरा EC है, ये मेरा EV है, ठीक है. सपोज माई EC इज, सपोज इसकी पोजीशन 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सपोज इसकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, रेफरेंस कोई और है, रेफरेंस 0 कहीं और है. अभी मैं EC और EV को रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, EV को रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, मेरा रेफरेंस कहीं 0 यहाँ पर है. विद रिस्पेक्ट टू 0 ये 10 है, ये 30 है, तो EC प्लस EV कितना हो जाएगा, EC प्लस EV बाय 2 कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाय 2 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दैट मीन 10, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर होगा कहीं पे, ठीक है. 20 मतलब यही कहीं पे होगा, करेक्ट है ना. 20 यहाँ पे होगा, 20 से 10 ऊपर EC, 20 से 10 नीचे EV,
तो इसका मतलब ये मिड में आ गया. ओके, दैट मीन्स दिस इज द मिड ऑफ द बैंड गैप. Reference something else. Reference still we don't decided. Okay, so we'll see now reference also. So this is my EC plus EV. Okay, when t is equal to 0. If t is not equal to 0, okay, and then mass of, if we assume mass of proton, mass of hole, or mass of electron is equal, then this becomes ln 1. Then also same condition, your EF will be EC plus EV by 2. Okay, so again mid of the band gap. So in generally questions for simplification, we if they are not given, if the mass of proton or mass of hole or mass of electron, if they are not given, then we take equivalent, and by making equivalent we'll take mid of the band gap. If they are not given, okay, if they're given, then we have to use the above formula. Okay, so this is the two condition. Now I want reference. Okay, I want reference means I want this Fermi level position with respect to my valence band. Okay, so if I want this position with respect to valence band, इसको मिटा दूं क्या? सर ये जो हमारे पास सेकंड कंडीशन थी इज नॉट इक्वल टू 0, तो सर ये कंडीशन कंडक्टर की है या फिर सेमीकंडक्टर की? सेमीकंडक्टर में तो ऐसा होगा नहीं. वो तो अज्यूम भी t is equal to 0 केल्विन है, तो हमारा ये नहीं सर, नॉट इक्वल टू 0 सर. हाँ नॉट इक्वल हाँ, तो t 0 होता ही नहीं है. मास है प्रोटॉन का. t 0 होता ही नहीं है. ये हाँ, तो t 0 होता नहीं, तो ये कंडक्टर तो ये टर्म हमेशा आएगी. ये टर्म हमेशा आएगी. यस सर. ओके, अगर अगर कभी ऐसा हुआ तो, हाँ बोलो. सर मैं अगर ऐसा कभी हुआ तो इट विल बी कंडक्टर. नहीं, कंडक्टर क्यों होगा? कंडक्टर से क्या लेना देना यहाँ पर? खाली बस टर्म में चेंज आएगा. वहां पे वहां भी तो जो, हाँ, कंडक्टर के अंदर भी जो आपका फर्मी लेवल होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. ओके, योर फर्मी लेवल इज ऑलवेज वीक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ओके, बहुत टेम्परेचर के साथ में आपके फर्मी लेवल का वेरिएशन बहुत कम होता है. ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं कई बार. एमएससी जब तुम जाते हो नेट के इंटरव्यू में, आईआईटी वगैरह में जाते हो, तो पूछते हैं कि फर्मी लेवल, वेदर फर्मी लेवल इज अ स्ट्रॉन्ग फंक्शन और वीक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो आप बोलते हो कि आपको पता होता तो दिस इज वीक फंक्शन. ओके, तो वीक फंक्शन क्यों होता है बताओ? टेम्परेचर का वीक फंक्शन क्यों होता है? तो वीक फंक्शन सर इसलिए होगा क्योंकि mp इक्वल टू mn है सर. नहीं, टेम्परेचर यहाँ सेमीकंडक्टर भूल जाओ. मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ. कंडक्टर तो पढ़ चुके हो ना पहले, सॉलिड्स तो पढ़ चुके हो तुम पहले. उसमें भी आता है फर्मी लेवल. आपका फर्मी लेवल की फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता होगा इसलिए सर. टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता होगा. तो फर्मी लेवल जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? फर्मी लेवल किस तरह से करता है सर? कैसे करता है? क्या 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 रिलेशन है? EF is proportional to n power 2/3. ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? सर ये पढ़ा सर. पढ़ा है ना. यहाँ पे n क्या है? n सर कंसंट्रेशन है सर इलेक्ट्रॉन्स की. So that is n is equal to n by v 2/3. करेक्ट? ठीक है. तो अगर किसी सॉलिड को तुम हीट करोगे तो ये नंबर तो चेंज होगा नहीं ना? नंबर चेंज होगा क्या? नहीं होगा. नहीं होगा सर. चेंज हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है ज्यादा सा चेंज. ठीक है, पर सॉलिड है तो सॉलिड का टेम्परेचर वॉल्यूम से तो ज्यादा चेंज होता नहीं है. अगर ज्यादा चेंज कर दोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, फिर वो सॉलिड रहेगा ही नहीं. तो इसीलिए क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. ओके, जो टेम्परेचर हम यूज करते हैं 200-300 उसमें चेंज नहीं होता है. दैट्स व्हाई जो फर्मी लेवल की पोजीशन वो टेम्परेचर के साथ में वेरी नहीं होती है. जैसे वीक फंक्शन, वीक डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर. ओके, फर्मी लेवल. ओके, यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग, सेमीकंडक्टर में भी देखते हैं. सो नाउ अगर 0 है तो ये मिड में आ गया. ओके, नाउ इफ इज नॉट इक्वल टू 0 देन आल्सो इट कैन बी मिड इफ वी टेक दिस टू इक्वल. ओके, नाउ आई वांट position of Fermi level with respect to valence band position. Okay, that means I want EF minus EV. Okay, so EF minus EV निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? EC minus EV by 2. Okay,
plus 3 kT upon 4 ln mp mn. Okay, this one. Okay, so now fe minus ev. Okay, ec minus ev eg. So अगर आपको बैंड गैप पता है क्वेश्चन में, okay, then also you can calculate the fermionic position with respect to valence band. Okay, this become 3 kT by 4 ln mp. Okay, mn. Okay, so this is this formula you have to remember. Okay, now सर फॉर्मूला में EC प्लस EV आएगा ना? ये माइनस कर दिया ना EV मैंने, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तो इसीलिए तो माइनस किया है ताकि EG के फॉर्म में फॉर्मूला आ जाए, वरना तो EC प्लस EV था ना. EG is EC plus EV upon 2 ना? EG क्या होता है? EG तो यहाँ होता है भी, यही तो इसी गलती को, इसी गलती के लिए तो मैंने लिखा है फॉर्मूला ऐसे है. तो कई लोग EC प्लस EV को EG कर देते हैं, ये थोड़ी EG होता है. EG तो आपका EC माइनस EV होता है ना, EC माइनस EV होता है. EC ये बैंड गैप EC माइनस EV होता है. तो इसी को करेक्शन करने के लिए जब EC प्लस EV को EG लिखते हैं, उसमें ये मानते हैं कि आपका वैलेंस बैंड की जो एनर्जी है वो 0 है. ठीक है, इसलिए मैंने इसको रेफरेंस ले लिया, तो वो आपका इजी हो गया. ओके, आपका EC माइनस EV है, दैट वो रेफरेंस की बात ना क्वेश्चन में लोग करते नहीं, ऐसे फॉर्मूला लगाते रहते हैं ऐसे इसको लगा करके, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू पता होना चाहिए किसके निकाल रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर. नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. Now one more thing, we just now we calculated that the concentration of electron is given by exponential, okay, EC minus EF by KT. Okay, now for intrinsic case, for intrinsic semiconductor, okay, assuming okay, mn इक्वल टू mp, अगर ये बराबर है और t is given 0 Kelvin, in that condition we can use this formula also. So we can write this as a, now EC minus EF can be written as a EG by 2. Okay, EG by 2. So this formula I can write exponential EG upon 2 kT. तो ये भी एक फॉर्मूला है. खाली अगर आपको कुछ नहीं दे रखा हो, आपको खाली आपको EG दे रखा हो, EC EV कुछ नहीं दे रखा हो, आपको खाली EG दे रखा हो, ठीक है, टेम्परेचर दे रखा हो, और NC तो कांस्टेंट पता ही है आपको, जो उसकी वैल्यू दे रखी हो, और ये कंडीशन दे रखी हो कि Mn इक्वल टू MP और T इक्वल टू 0 कंडीशन. इन दैट केस आल्सो यू कैन कैलकुलेट इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. ओके, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. तो एक तो फॉर्मूला ये एक हो गया. आप एक क्वेश्चन लिखो. Question. Just give me 1 minute. We are given two intrinsic semiconductors. Okay, we are given two intrinsic semiconductor. One is semiconductors A, whose band gap is given 0.36 electron volt. Okay, intrinsic semiconductors. Okay, A's band gap is 0.36 and B has band gap as 0.72 electron volt. Okay, and it is given Me equal to Mn equal to Mp
okay, equal to m, mass of the electron, and temperature is given, T is equal to 300 Kelvin. Okay, he asking ratio of intrinsic concentration in semiconductor A to ratio to B. Okay, ये आपको कैलकुलेट करना है. बैंड गैप दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, कैसे कैलकुलेट करोगे? सर ये एनर्जी बैंड गैप है सर. हाँ, एनर्जी बैंड गैप है. से दिस इज ई ए, ईजी ए, से ये ईजी बी. सर dt 3/2 to the power minus eg/2 के सर आप लास्ट वाला जो फॉर्मूला दिया है इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? बी टी 3/2 एक्सपोनेंशियल, ओके, माइनस ईजी अपॉन 2 kT. ये फॉर्मूला पता ही आपको. बी कांस्टेंट है, टेम्परेचर दोनों के लिए सेम दे रखा है, खाली ईजी दोनों के लिए अलग अलग है, टेम्परेचर सेम ही है. वो निकालो रेशो एन आई ए वर्सेस एन आई बी. ओके, ये से कट जाएगा सब, तो क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल माइनस ईजी ए, ओके, 2 kT अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस ईजी बी 2 kT. ओके, अब वैल्यू दे रखा है, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा आंसर. सर NIA अपॉन NIB निकालना है ना? हाँ. 0.18 भी ये आएगा एक्सपोनेंट. to 0.18. So this is given, one is given 0.36, so minus 0.36, okay, 2 kT. So 2 kT, I told you kT कितना होता है? 26 millivolt. Okay, point 25 of ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सो दिस बिकम 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ओके, कैंसिल हो जाएगा ना KT. हाँ, सॉल्व होता है ना कितना आ रहा है. और ये एक्सपोनेंशियल ये कितना है? माइनस ईजी 72 है, 72 और 1.03 into 10 to the power 6. Okay, so if I solve this one, okay, so this will come as e power minus 0.36 upon 0.06. okay, तो कितना आ रहा है? ये सॉल्व करता हूँ. सर e की पावर 9/13. 1.015 into 10 to the power 3. मेरा आंसर आ रहा है एक्सपोनेंशियल. इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 6.923 और इसको फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1015.36. ओके, अगर आपको इसको Yes sir. 2.5 लोगे तो कुछ और हो जाएगा. ओके, थोड़ा सा आंसर वेरिएशन आएगा. अगर इसको चेंज किया, इसको 2.57 लिया है या 2.025 लिया है तो आंसर वेरी करेगा. तो या इसके आसपास आंसर आना चाहिए 1000 के आसपास. देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. Yes sir. बाकी लोग भी देखो. सर न्यूमरेटर में भी KT है और डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो जाएगा? अरे एक्सपोनेंशियल पावर है ना, ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल पावर ऊपर आया तो ये यहाँ पे पावर में पावर में प्लस हो जाएगा. हैं, ऐड हो जाएगा ना. इसको जाके ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, ऊपर ले जाके प्लस करके ऐड कर देंगे. और क्लियर है तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन में गिवन है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is n is equal to mp. ये given है. okay, that is equal to free mass of electron. okay, free mass of electron that is 9.1 10 raised to power minus 31 kg given. okay, and then band gap also is given. okay, band gap is given 1.2 electron volt. okay, and temperature is given 300
Kelvin. Okay, so that is intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. Okay, intrinsic. So you're asking calculate the concentration of electron. Okay, करो कैलकुलेट, कैसे करोगे? जैसे अभी किया वैसे करोगे कि किसी और तरीके से करोगे? सर जैसे भी किया वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं, ईजी दे रखा है ना। हाँ, इजी देर का ऐसे भी कर सकते हैं, और जो दूसरा फॉर्मूला बताया था मैंने पहले, अभी थोड़ी देर पहले, n इक्वल टू एन सी ई पावर माइनस ई जी 2 kT, इससे भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप वो टी पावर 3/2 का टर्म नहीं है ना, वो तो आएगा ही सर, एनसी आएगा तो आएगा ही, वो एक ही बात होगी। ठीक है, वो तो एक ही बात हो जाएगा। इसको रखोगे तो वही 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 सेम चीज तो आएगी। इसको एनसी की वैल्यू रखोगे तो t/3 सेम वैल्यू आएगी। तो इसको कैलकुलेट करो। सो थोड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है। ओके, दिस विल टेक टाइम। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, यू हैव टू सॉल्व और यू हैव टू गिव मी। अभी एंड करूँ कि आगे चलने दो क्लास? चलने दीजिए सर। चलने दो ना, ठीक है, चलो। तो फिर एक और कर लेते हैं, एक चीज और कर लेते हैं, नई चीज कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा। सो नाउ, हाँ सर। हाँ सर जो एच था उसकी वैल्यू क्या थी? 6.60 × 10⁻31। किसकी? एच की प्लैंक्स कांस्टेंट की। प्लैंक कांस्टेंट। ओके, हाँ, तो आप ले लो 6.6 × 2 -34 जूल सेकंड। ओके ओके सर, ओके ओके ओके, नाउ इसका डिस्कस करना है, इसके बाद में कंडक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, डस्टर, ये होमवर्क कर लेना इसको, ठीक है? इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सो नाउ आई वांट टू put the heading conductivity of intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. Okay, so how to write the conductivity expression for intrinsic semiconductor? So I know the conductivity for semiconductor is given by NE mu. Okay, NQ mu n plus PQ mu p. Okay, that is what is some semiconductor. Okay, and here for intrinsic n equal to p equal to ni. Okay, and q is electron charge. So I can simply write that conductivity of a intrinsic semiconductor is given by NIE mu n plus mu p. Okay, ये एक्सप्रेशन ठीक है क्या? यस सर। Okay, now I want to I know what is Ni. Okay, Ni already I know, I already know. So my sigma I Ni is some मैं constant लिख रहा हूँ, okay, वो पूरा नहीं लिख रहा हूँ। B I know B t power 3/2 exponential Eg upon 2 kT. Okay, ये तो मेरा Ni है, ठीक है, साथ में E भी है, and then I have mu n plus mu p. Okay, now intrinsic जो कंडक्टिविटी होती है दैट विल सी एट हाई टेम्परेचर। ओके, जनरली 200 से ऊपर, 200 300 400 ऊपर करते हैं। उस टर्म पे क्या होता है, आपकी जो ये टी की टर्म है और ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट करती है कंडक्टिविटी को, एक्सपोनेंशियल टर्म। ओके, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपका जो मोबिलिटी हायर टेम्परेचर एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट करता है। यस यस यस। ओके, नाउ जस्ट सी, दिस इज योर mobility versus temperature graph. Okay, if I see this graph is comes like this. ये दिख रहा है ग्राफ? So this is in the beginning when you increase at t, your mobility is increased as a t power 3/2. Okay, similarly if you increase high temperature, this is decreases as t power minus 2/3 or 1/2/3. Okay, so this part is because of impurity scattering or ion scattering, impurity scattering.
सर नेचर डिफरेंट क्यों मिलता है हमें t raised to 3/2 एक साइड को t raised to -2/3 ऐसा क्यों? तो लो टेम्परेचर का मतलब जानते हो क्या होता है? हम एकदम फ्रीज आउट टेम्परेचर स्टार्ट कर रहे हैं, 0 केल्विन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, उस समय आपके जो आयंस का मूवमेंट नहीं होता, इंप्योरिटी आयंस का मूवमेंट नहीं होता है। ओके, जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हैं दे स्टार्ट मूविंग। ओके, सो दिस चार्ज पार्टिकल, ओके, ये चार्ज पार्टिकल को स्कैटर करेंगे, बट दैट स्कैटरिंग इज नॉट वेरी हाई। ओके, दैट स्कैटरिंग विल इंक्रीज देयर मोबिलिटी, क्योंकि लो टेम्परेचर पे तो सब कुछ फ्रीज आउट है। Okay, if we slowly increase temperature, then what will happen? Mobility will increase. But when we increase the temperature very high, in that case, what will happen? In the solid, your atom will start vibrating very fast. Okay, that is called phonon vibration. So once the amplitude of phonon vibration is very high, okay, instead of increasing mobility, they will start decreasing. They'll try to make the reduce the scattering will increase. Okay, and the mobility will decrease. Okay, that's why at low temperature it is called impurity or ion scattering. Okay, while at higher temperature this is called lattice scattering. Lattice scattering और फोनोन स्कैटरिंग। तो फोनोन स्कैटरिंग है वो हमेशा कंडक्टिविटी को डिक्रीज करता है। ओके, रेजिस्टिविटी को बढ़ाता है। एंड दैट इज एट लो टेम्परेचर इट इज impurity scattering that will increase because of we are coming from freeze out temperature. Okay, then in the beginning mobility will increase, then it will decrease. Okay, now our expression is this. सर मोबिलिटी मींस कि इलेक्ट्रॉन कितना मूव कर पा रहा है। पर मोबिलिटी डेफिनेशन क्या है? V by E, वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा है? आप सब कुछ फ्रीज कर दोगे 0 केल्विन पे, तो इवन आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो वो मूवमेंट वो स्लो होता है। ओके, टेम्परेचर इन द बिगिनिंग में टेम्परेचर सपोर्ट करता है मोबिलिटी को। ओके, बहुत कम टेम्परेचर पे, 20 30 40 50 तक केल्विन तक, बहुत लो टेम्परेचर पे। उसके बाद टेम्परेचर वो उसका जैसे ही फोनोन वाइब्रेशन बढ़ता है, that will start reducing your this mobility. Okay, so what is phonon vibration, sir? Phonon vibration means your atomic vibration. You have atom. Okay, in atom you have lattice, and lattice में atom क्या होता है? When you supply energy, thermal energy, then your atoms start vibrating. उस वाइब्रेशन के कारण ही तो स्कैटरिंग होता है। आपका रेजिस्टेंस क्यों आता है? आपका कंडक्टर मेटल होता है, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन आपका सॉलिड होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, and these atoms are vibrating. Because of this vibration, there is scattering. That's why your conductor show resistivity. अगर ये फोनोन वाइब्रेशन नहीं होगा तो फिर कंडक्टर रेजिस्टिविटी कहाँ से आएगा? ओके ओके सर, मतलब सर जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं उसको फोनोन वाइब्रेशन कहा जाता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम को, एटम्स। ओके, एटम्स लैटिस मूवमेंट को बोलते हैं। फोनोन इज द क्वांटा ऑफ लैटिस, लैटिस वाइब्रेशन को बोलते हैं फोनोन वाइब्रेशन। ओके सर। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, now this is constant, this is t power 3/2, and this is mobility is 1 proportional to 1 by t power 3/2, sorry 3/2 है। ओके, 1 by t/2, so t/3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, कैंसिल हो जाएगा, या उसका इफेक्ट, क्योंकि ये भी t/3, ये भी अप्रोक्सीमेटली t/3/2 है। अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली 3/2 नहीं होता है, थोड़ा सा ऑलमोस्ट इक्वल टू 3/2 होता है। ओके, तो ऑलमोस्ट 1.4 1.3, ओके, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, और वैसे भी लो टेम्परेचर पे इसका इफेक्ट होता भी नहीं है, कम होता है, ये टर्म डोमिनेट करती है। तो देन आई कैन राइट नाउ, बिकॉज मैं conductivity C sigma I is equal to sigma 0, okay, exponential Eg upon 2 kT, where my sigma 0 is B, जो कांस्टेंट हमने पहले लिखा था वो याद रख लेना, कांस्टेंट क्या था, T का जो भी कांस्टेंट है, T 3/2, okay, and into E and this mu n plus mu p. ओके, ये टर्म है दैट इज ऑलमोस्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। तो इसको, ये टेम्परेचर से कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसका ये जो t/3 है, ये वाला कैंसिल कर देगा, बिकॉज योर म्यू इज प्रोपोर्शनल टू t power 3/2 एट हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर मतलब जहां पर हम इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं, इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी हाई टेम्परेचर चाहिए ना, बिकॉज दिस इज योर बैंड गैप।
Okay, this is band gap, this is EC. So you want to make electron from valence band to conduction band. Okay, so you need high energy, high temperature. Okay, so now हाँ म्यू इज ये जो टर्म है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, सामने लिखा है, लेकिन म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू 3/2 ना। ये T/3/2 है और ये T/3/2 का कट नहीं जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो ये टर्म क्या है, इस टर्म का ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। ओके, सो नाउ मेरा जो कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है, दिस कम्स आउट इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर as this one. Okay, now if I plot my graph sigma I versus 1/t, okay, so ये ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन आएगा। okay, log of sigma, okay, log of sigma I by 1/t. okay, if I take log sigma I, okay, this become log sigma 0, constant हो जाएगा तो, और minus Eg upon 2kT. okay, so if I plot a graph between this, and the slope will be equal to minus Eg upon 2k. okay, याद रखना है, एक क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्लोप अगर वो T/3 म्यू को T/2 माने, म्यू मोबिलिटी को प्रोपोर्शनल T/3/2 है, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा? तो स्लोप इस ग्राफ का क्या आएगा? माइनस Eg/2k. ओके, ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है। ओके, एक क्वेश्चन एग्जाम में और आया है, वो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, आपने कहा कि हायर टेम्परेचर पे हाँ वो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म टर्मिनेट करेगी, हाँ, तो लोअर टेम्परेचर्स पे क्या होगा? लो टेम्परेचर पे तो हम लोग इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी तो लो टेम्परेचर पे देखते ही नहीं ना, क्योंकि वो बैंड, आपको इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचाना है? बैंड गैप से वैलेंस कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है। तो वो जो रीजन आता है इंट्रिंसिक में, यही तो डिसएडवांटेज है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ में। ओके, योर रूम टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर काम नहीं करता है, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि व्हेन यू इंक्रीज लैबोरेटरी, व्हेन यू डू जीरो पे तो इंसुलेटर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फ्रीज आउट होता है, सारे सब इंसुलेटर होता है। इवन यू कम रूम टेम्परेचर, the resistivity is very high, conductivity is very low for intrinsic semiconductor because there is no electron conduction electrons. Okay, as you increase the temperature up to 200 300, तभी वो usable होते हैं। okay, and then also they are not usable, तभी तो हम इनको डोप करते हैं, so that they should be useful at room temperature. That's why we dope, ताकि रूम टेम्परेचर पे हम तो काम तो रूम टेम्परेचर पे करेंगे ना, और कई देशों में तो रूम टेम्परेचर से भी नीचे काम करेंगे। okay, so that's why we dope this intrinsic semiconductor with impurities, so that we can get the high conductivity at temperature at we are interested. okay, where we are working. So now this is minus Eg/2k. okay, now एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम में, ये भी जेम में आया है। ओके, सो स्लोप दे रखा है। ओके, लॉन सिग्मा वर्सेस 1/t, 1/t की जगह 1000/t कर दिया है। ठीक है, 1000/t में ग्राफ दिया है। ओके, सो दिस इज 2 एंड दिस इज दे गिवन 3। 2 पे वैल्यू दे रखिए 36.5 एंड ये दे रखिए 32.5। ओके, and this is 1000/t. okay, and he asking what is the band gap, calculate the Eg, निकालो Eg कितना आएगा। so you know slope of the graph is equal to minus Eg/2k। अब इसका स्लोप निकाल दो, इसको माइनस Eg/2k का कर दो कि k इज योर कांस्टेंट 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ओके, इसको यू कैन कन्वर्ट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आल्सो। तो अभी सॉल्व करो, कितना आ रहा है, Eg कितना आ रहा है, पहले जूल में निकालो एंड देन कैलकुलेट
इलेक्ट्रॉन हाँ वोल्ट। सर, हाँ सर इसने जो 1000/t किया है, क्या हाँ हम हाँ, लोग को स्लोप में भी कुछ चेंज करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा ना। अभी यहाँ पे ये 1000/t 2 है, तो 1/t कितना है? 0.002। ये एक्चुअली 0.002 हाँ है, यस सर, तो यस इतना सर, यस सर। ये फर्क करना पड़ेगा। ये 1000/t2 है, 1000/t3 है, क्योंकि हमने स्केल को मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि छोटी स्केल थी, इसको इसको बड़ा करने के लिए हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, 1/t इज वेरी लेस ना। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? टेम्परेचर कितना है सर? टेम्परेचर 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर ले लो। रूम टेम्परेचर जरूरत क्या है? टेम्परेचर ग्राफ तो दे रखा है ना, ये टेम्परेचर जरूरत क्या है? हमको स्लोप निकालना है। 4 kV। स्लोप स्लोप निकालो। स्लोप क्या आ जाएगा? सर 36 36 36 एक मिनट, 36.5 माइनस 0.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 32.69 आएगा। ओके, और ये इसका स्लोप लेंगे तो 1/t। ओके, 0.002 माइनस 0.003। ओके, तो ये माइनस में आएगा स्लोप। ओके, इसको कर दो माइनस Eg/2 के कर दो। सो आपका जो आएगा आंसर Eg इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 36 पॉइंट, ये तो आ गया 4 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया आपका? ये आपका आ गया 0.001 माइनस का माइनस इंटू 2k 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये तो जूल में आ गया। इसको कर दो डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो ये आंसर आना चाहिए 0.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक करो। सर यही है सर। ओके, तो इसको कंसंट्रेशन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना? नहीं वो तो अब क्वेश्चन ग्राफ, वो तो उसमें उसमें फिर वैल्यू देनी होनी चाहिए। अभी यहाँ तो टेम्परेचर दिया नहीं ना, ये तो ग्राफ दे रखा है हमको, ग्राफ से निकालना है। कनेक्टिविटी ग्राफ है, वरना फिर इंट्रिंसिक कंडक्टर निकालो, फिर उस पर पुट करो, उसके लिए भी डेटा डेटा कहाँ दे रखा है पूरा। ठीक है, और तो अभी इजी हमने निकाला है। आप कर सकते हैं जाके वहाँ पे। ये गैलियम आर्सेनाइड का है, निकालोगे तो आएगा पावर 10⁻20 के आसपास आएगा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। Okay, so now I'm stopping class here. Okay, we'll meet tomorrow. Okay, tomorrow we'll start, we'll do some problems and we'll discuss extrinsic semiconductor tomorrow. Okay. ओके पीएन जंक्शन उसी में है ना सर? हाँ इफेक्टिव मास नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो मैं आपको डिस्कस करूंगा जब बैंड थ्योरी में। ठीक है, अभी उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो अभी इंट्रिंसिक करेंगे, एक्सटेंसिंग करेंगे। ओके, वंस इंट्रिंसिक एक्सटेंसिंग इज कंप्लीटेड देन विल मूव फॉर पीएन जंक्शन। और एक बार पीएन जंक्शन की क्वेश्चंस हो जाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, देन वी विल स्टार्ट डायोड। ओके सर थैंक यू सर। थैंक यू फेटोड भी है क्या सिलेबस में? जी। फेट भी है सिलेबस में? वो सब है, ट्रांजिस्टर भी है, जेफेट भी है, मॉसफेट भी है। ओके, वो सब जितना एग्जाम में आता है उतना करा देंगे। ओके सर। लोअर टेम्परेचर में वो जो टी टू द पावर 3/2 है सर, वो जो लोअर टेम्परेचर में टी टू द पावर 3/2 है, हायर टेम्परेचर में वो टी टू द पावर -3/2 कैसे? मैं वो मोबिलिटी का बोल रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, तो मोबिलिटी वो एक्सपेरिमेंटली मेजर है। टेम्परेचर का वेरिएशन, टेम्परेचर के साथ में जो मोबिलिटी का वेरिएशन ऐसे आता है, लो टेम्परेचर पे मोबिलिटी बढ़ता है पहले। ओके, सर, अब वो सर उसको उसका मैथमेटिकल कोई प्रूफ है और वो एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं उसको। मैथमेटिकली ऐसे प्रूव करना तो दिक्कत मुश्किल है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं उसको। ठीक है, उसका प्रूफ तो मैंने कभी देखा नहीं है। ओके, तो इफ यू इंटरेस्टेड, मैं आज थोड़ा रिसर्च करूंगा, अगर मिलता है मुझे ओके टेम्परेचर वेरिएशन तो बता दूंगा कल। ठीक है, ठीक, थैंक यू।